It's Friday and it's the right day to do mutual fund Q&A. Welcome to Fundu Money, your 24 into 7 buddy for all your money matters. फंडू मनी में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है। आज के दिन हम म्यूचुअल फंड प्रश्नों के जवाब देते हैं। हमारे दर्शकगण जो सवाल पूछते हैं और इस आज भी हम दो प्रश्नों के जवाब देंगे। हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में। Welcome to Fundu Money, your 24 into 7 buddy for all your money matters. We are doing mutual fund Q&A, which we do every Friday, and we'll be taking up two questions from our viewers. फंडू मनी में आपका फिर से स्वागत है। म्यूचुअल फंड Q&A कर रहे हैं, दर्शक गणों के सवाल उनके जवाब। चलिए इस बार इस एपिसोड में हम दो सवाल लेते हैं हमारे दो दर्शक गण के, और पहले अंग्रेजी में लेते हैं, फिर उसका छोटा सा सारांश मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ। सबसे पहले सवाल लेते हैं हमारे रेगुलर व्यूअर जो हैं Amit Belwal ka. Amit Belwal writes, he wants to know basically whether one can do STP in ELSS, and he says that he has done two ELSS this year for tax saving purpose, and he's put in lump sum amount. Can one do ELSS, and how is it done? So it's not very clear what exactly is being sought here. I mean, in the fullest detail, if the idea is to do and put a lump sum into ELSS through STP, yes, you can do that. There's no problem. Now, what you can also do is, if the question is, can you put when the maturity happens, the the whole money is got matured, the whole money. You want to put it in somewhere else, in any other mutual fund, you can then do the STP, but that's when your 3-year lock-in period needs to get over, and you can only obviously do it in an open-ended fund. So we hope we have generally covered the bases. If you want to do it at the time of investment, yes, you can do it. It makes a lot of sense. If you suddenly have a lump sum amount, you can do it. A lot of times what happens is you've started an SIP and you have got a particular scheme, you have been investing. Instead of having more schemes here and there, you can just bolster or supplement the investment out there. So STP helps there, and sometimes you want to move it away. There's a large amount which has got matured. Of course, remember in SIP, each investment, each installment has got a lock-in period of 3 years. So you have to keep all these in mind. Now, a quick wrap in Hindi. Amit Belwal जानना चाहते हैं कि ELSS में STP किया जा सकता है कि नहीं। तो इनके प्रश्न से हमें क्लियर नहीं है कि वो किस स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर निवेश करने की बात हो रही कि शुरू में एक मुश्त रकम को STP के द्वारा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा ELSS में डालने की बात हो रही, तो फिर तो बिल्कुल हो सकता है और काफ़ी सेंस बनता है। ये स्पेशली सेंस तब बनता है अगर मान लीजिए आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP से कर रहे हैं, तो तब ये अगर आपको मान लीजिए कोई मुश्त रकम आ जाती है, मान लीजिए बोनस मिलता है या कुछ और मिल जाता है, उसको आप STP से उसी स्कीम में डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके ढेर सारे स्कीम में निवेश करके रखना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर आप चाहते हैं कि STP के द्वारा एक मुश्त रकम को आप ELSS से कहीं और ले जाएं, मतलब वो लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, तो वो अगर चाहते हैं वो भी हो सकता है। आप जो भी म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं वहां पे STP वहां पे भी किया जा सकता है, बशर्ते ये जहां पे जा रहा है ये पैसा वो ओपन एंडेड फंड है। हमें उम्मीद है आपको सवाल का जवाब संतोषजनक मिला होगा। चलिए दूसरा एक सवाल लेते हैं, पहले अंग्रेजी में। मनोज रॉय लिखते हैं कि उनके 6 अलग-अलग goals हैं। मनोज रॉय writes that he's got 6 different goals, and he has given various periods, 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, 21 years, and he wants to know how to get a portfolio done. That's broadly his question. Well, Manoj, first a bit what we like to tell you is that probably you need to go to a financial planner, because they need your overall financial details. Yeah, why it's important is people need to know your whole financial realities. For instance, how many years you have till retirement,
how many dependent people you have, what are the things, investments you are comfortable with. So when you go through a financial planning process, you're typically put through a very detailed a questionnaire, you know, where people capture a lot of important details about you, because your requirements will not match the requirements of anybody else. So any answer that anybody gives on a channel like this or any other channel will not be a great answer, because it is not capturing your essential and important details. So it's very important for you to get a proper answer, you get a proper analysis done. And it doesn't matter if you have to pay a little bit of money, a little bit of charges to get this kind of analysis done. So it can happen in your bank. Remember, it has to be a financial planner, because they do the whole financial planning process, whether it's your tax, whether it's your investment, whether it's your insurance, whether it's your goal planning, the whole works, the whole financial world that you have, the whole finances that you have, they need to be planned properly. So having said that, what you could do, how we could help here in this particular episode is tell you that anything you're talking about, 5 years, 3 years. If it's a 3 year thing, typically you should be looking at a debt fund, a good debt fund. 3 to 4 years, 5 years, we would say look for a balanced fund, because they have a little bit of an equity exposure. Obviously, it cannot be all equity, simply because an equity fund will do the best results you'll get from 8 to 10 years or more. You need to stay invested. Anything 8 to 10 years or more, you can go to a good equity fund out there. Between below 8 years, balanced fund. Look for the best balanced fund. There are plenty of them. You can get some good analysis done. Go to a good advisor who would do the analysis. See whether, say for instance, if it's a balanced fund, see whether it's every year how it has been performing vis-a-vis its benchmarks and its competitors. If it's consistent, that is the fund that you should be looking at. It's not necessary that it will replicate its performance, but you will be able to invest with a lot of confidence. Same with debt funds, same with equity funds. So hope you will go to an expert and get this problem solved, because as I'm telling you, it's going to be very difficult for anybody to generally give you a proper advice. So they need to capture all your details and do a proper analysis. And you'll be surprised to know, for an individual, it probably takes about 25 man hours or something to that effect to do a proper analysis and proper financial plan. There's a lot of work that goes in. So it's good to do it, because you'll have to do it only once. And after that, you can keep updating it, keep tinkering it, and your job will be done. So it's a very important thing that we need to do, because you can have great investments, but they'll be of no use if they do not meet the needs that you have identified for yourself. Firstly, you also need to prioritize those needs, know whether they're realistic, whether they're achievable. Financial planning does all that. Hope this helps. Now, quick summary in Hindi. मनोज रॉय हम हमसे चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं. उनके कुछ ज़रूरतें हैं जो 3 साल बाद आएंगी, कुछ एक 5 साल बाद है, एक 15 साल बाद है, एक 21 साल बाद है. तो हमारा ये कहना है कि वो ज़रूर एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएं, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं, वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस कैप्चर कर सकते हैं. ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट इशू नहीं है. ये आप फाइनेंशियल जब पोर्टफोलियो बनाते हैं एक जरूरत के लिए, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग का हिसाब किताब आता है, उसमें बहुत कुछ आता है. आपने इंश्योरेंस की है कि नहीं? अगर आप पहले ही इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं और इंश्योरेंस नहीं किया है, तो फिर तो आप मुश्किल में पड़ेंगे. अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो मान लीजिए कोई घर में कोई एपिसोड, हादसा हो जाता है या सड़क में हो जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी. तो आप एक जगह में आगे बढ़ रहे हैं और बाकी जगह में नहीं बढ़ रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा. आप मान लीजिए अगर लोन को अच्छे से मैनेज नहीं करते, टैक्स को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं हो सकता. तो जैसे एक थाली में सब प्रकार के खाने होने चाहिए, सब प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इम्पोर्टेंट है. आप चारों तरफ नजर रखें. तो अच्छे फाइनेंशियल प्लानर कैसे मालूम कर सकते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जहाँ पे CFP सर्टिफिकेट्स हैं. देखिए आपके शहर में कौन से हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास जाके चार्ज दे सकते हैं. बैंक्स इसमें देते हैं. ब्रोकरेज हाउसेस, कई ब्रोकरेज हाउसेस, अच्छे ब्रोकरेज हाउसेस
फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान चाहिए। पर जहां तक चुनाव के बारे में बात है, म्यूचुअल फंड जो कि जहां पे हम आपकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो में, ये जरूर कहना जरूरी है कि 3 साल तक का अगर गोल है तो आप डेट फंड देखिए। बैलेंस फंड 8 साल तक, 5 से 8 साल के बीच का कोई अगर गोल है तो बैलेंस फंड। 8 साल से ऊपर अगर चला जाए, 8 से 10 या उससे ऊपर, इक्विटी फंड देखिए। देखिए कि वो फंड्स ने, जो डेट फंड है, ये बैलेंस फंड है या इक्विटी फंड है, उन्होंने अपने बेंचमार्क्स के साथ कैसा परफॉर्म किया। उससे नीचे रहे, ऊपर है, ऊपर रहना जरूरी है, बेंचमार्क्स को बीट करना बहुत जरूरी है। और बाकी उनकी जो कंपीटिंग फंड्स है, फ्रंट सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड पिछले 3 साल में, 5 साल में और 1 साल में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, ये जब आप जान जाएंगे तब आप चुनाव कर सकते हैं। पर ये खरा वैसा का वैसा ही रह जाएगा अगर आपने बिग पिक्चर मिस कर दिया, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। हमें उम्मीद है आपको ये जवाब संतोषजनक लगा होगा और हम आपके और प्रश्नों का इंतजार रहेगा। We hope you found this useful. Please keep writing to us. Please keep giving us your suggestions. We find them really, really educative, and it helps us figure out what people need. If you have come here for the first time, why not subscribe to the channel and get to know at the earliest about our latest uploads. Follow us on other social media networks, that is Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, and many others. Also visit our website www.fundomoney.com. We'll be back next week. Take very good care of yourself. आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, सवाल और प्रश्न लिखते रहिए, हमें बताते रहिए, सुझाव देते रहिए। आपको अगर ये हमें हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड्स के बारे में मालूम रहे। और इसके अलावा हमारे साथ सोशल मीडिया के नेटवर्क्स में हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब में तो ये वीडियो है ही, और इसके अलावा हम लोग ट्विटर पे भी हैं। और हमारे साइट पे जरूर आइएगा www.fundomoney.com। तो अगले शुक्रवार तक इंतजार रहेगा आपका। आप अपना भरपूर ख्याल रखिए। नमस्कार।